afternoon, everyone, ladies and gentlemen. We are back with a new episode of Art and Culture Show, which is focusing on literature and most important is the narrative description and the poetic touch of feelings. Today we have very interesting English and Urdu and Arabic compositions, and they are based on different poets and different thoughts. We will start our program with our first guest, who is from United Arab Emirates, and she is going to share the thoughts of the week. So let's welcome Salma Al Qubaisi, live from Abu Dhabi, United Arab Emirates. Hello. Hello, Salma. How are you? Walaikum salam. So I hope you are doing good, and I would like you to request to share your thoughts of the week. Yes, absolutely. Today my thought of the week will be in Arabic. And today my topic about الحياة. في أقوال نقولها like أين اخضرار الرؤى، أين الوعود، أين الصفاء. الحياة جدا ثواني بس. Yes, ladies and gentlemen, the haya, which is in English we say haya, like life. In Urdu we say hayat. In Arabic we say haya, and in English we say life. So life is sometimes very complex, very negative, very stressful, and sometimes it is very positive as well. So all human being, what they need to make sure that their life is becoming positive, so this positivity will give them a feeling of being a human, and it will spread across the globe and around us. Yes, Salma, please go ahead. Yes. So الحياة لا تعدل، فقط تعود عليها. وإذا نظرت للحياة بروح مبتسمة حتما ستجدها مثيرة للاهتمام. تصبح الحياة ذات معنى حينما نجد شيئا نكافح من أجله ونسعى بشغف للوصول إليه. كثرة المصائب تجعلنا نرى الحياة طويلة جدا. طالما استمرت عواطفنا ستستمر الحياة، فبدونها ستصبح الحياة عبارة عن غبار. وتصبح أكثر قوة لو جعلنا من الأيام الصعاب سلما نصعد من خلاله نحو القمة في حياتنا. الحياة رواية جميلة عليك قراءتها حتى النهاية، لا تتوقف أبدا عند سطر حزين، قد تكون النهاية جميلة. لا تخلو الحياة من الجمال والتفاؤل والأمل، فهي بجمالها تحمل أنقى وأعمق المعاني. ومنها أفضل أيام حياتنا هي الأيام التي سمحنا لها بالعيش في ذاكرتنا. من المؤكد أن البقاء على قيد الحياة والأمل أمر جميل ورائع. الحياة جميلة جدا عندما تختار حياتك الخاصة بدلا من حياة الآخرين، لأنك منحت نفسك فرصة للبقاء وليس فرصة للوجود. الحياة يا أصدقائي حديقة مليئة بالبهجة والرضا وفرصة للسعادة. ستصبح الحياة أكثر إيجابية لو نظرنا إليها بعين التفاؤل والأمل. ولا تزال الحياة بها العديد من الهدايا، فهي مليئة بالجمال، فانتبه إليها. انتبه إلى النحلة والطفل الصغير والوجه المبتسم. أشعر برائحة المطر، أشعر بالرياح. امنح فرصة لحياتك بالكامل، ستصبح أكثر قوة لو جعلنا من الأيام الصعاب سلما نصعد من خلاله نحو القمة في حياتنا.
This is my thought of the week. Oh, About amazing, amazing thought. Hayat Jameel and Hayat Kamila. Wow, amazing. You would like to give your thoughts in English, or it's okay to move forward? um, we have to accept life. We have to look a positive way to the life and give it a smile. The life will give us impact. We have to see life in a more proper angle. We have always hope in life and enthusiasm. We have to look into life in a more deeper meaning or understanding. We have it's more positivity on life and see the, like when we say the the filled part of the cup. We have to see the positivity in life. We have to to see the smallest things like the bee. We have to see enjoy the children, a small child while he's crawling, for example, smiling faces. Enjoy the smell of the rain, feel the breeze, feel the wind. Give yourself a chance in life in total. You'll be more stronger when you enjoy your entire life and don't just focus or think about negativity or down moments in your life. Oh, that's an amazing message, and this is true that life need to be positive, and we need to do a great effort to make the life beautiful. It has certain stages. You need to enjoy the each and everything, thing of a life to make it beautiful. Like as Salma said that you have to enjoy like cooking, you have to enjoy to being in kitchen, you have to enjoy your neighborhood, you have to enjoy your relatives, your people around, who may not look like a big happiness, but we have to find happiness in each and every aspect of the life. Otherwise we say that in the hayatul dunya mataul ghurur. What Salma, what we say about the exact word? إن Hayat dunya. إن الحياة Mataul. الدنيا. Yes. That's great. So, with this beautiful concept of life and positivity, we'll move towards our Urdu reciter and see what is her thoughts of the day. Hi, good evening. Thank you for Hi, inviting me. Asma. Thanks for joining us today. So, what are your thoughts? Please go ahead. Thank you very much. My thoughts are similar to what Salma has just shared. She shared about life to be beautiful, and life can be beautiful, but things should be in moderation. So that's the key point. The article that I wrote this week as thoughts of the week was on digital clutter. So, in today's time, we are basically living digital relationships more than the physical ones. Uh, Digital apps, digital devices, they all overwhelm life. And while living through the day, we come across a lot of stuff which people are choosing for us. So we find it very interesting to open our handheld devices and check statuses of all our friends and connections. Whatever they are thinking or whatever their thoughts are, they are posting their moments, their gestures, their pictures. Um, at times, it becomes overburdening. Most of the time in today's life, around 50 to 70% of our time is spent on digital devices. This is my observation, and it can be skewed by the general statistics. But if we spend that much of substantial time in which things are coming to us and we are reacting, we are posting gestures, we are liking, we are disliking, it really governs our mood, and it really has an impact on how we respond,
whether we are happy, whether we are sad, it really has an impact on it. Uh, if we do not observe moderation or filtration in using these platforms, definitely it brings a burden on our thoughts, on our daily life, and the way we react and we post behaviors around our people. So it can become a clutter. I mean, clutter is a collection of things which is not arranged, which is not filtered, which is not checked on a timely way, checked from time to time. So there is a need to assess what exactly we need. Do we really need Facebook? We need to set some objectives and aims on what we are using as digital apps. If there are too many, then definitely there is a problem. If we don't have a presence, I must say, then in today's time, that's a problem as well. But we need to be choosing as to what we want. We want the content to reach to our brains because our brain processes it. We get affected by it as human beings. People are posting their thoughts, their emotions. Sometimes they are positive thoughts, sometimes they are negative thoughts. And being human, we have a tendency of resharing if something is happening negative around. Positive thoughts and positive shares are uh, less shared compared to the negative stuff which goes viral around very fast. So there is a need to declutter this digital clutter which is happening in our lives. So basically I would conclude that the cumulative cost of non-essential things that we clutter our lives with, it can outweigh the small benefits as they appear, which we call them pleasures. Now we must take a step back and ask ourselves to what extent we are allowing this clutter to affect us. We need to recalibrate and declutter and clear out our digital space. So that was the message that I would like to give. These are amazing thoughts, and you're right that the digital presence need a choice. Too many things you can't handle, and it's all about not you or not me. It's all about the new world, digital world. Even the governments are trying to give a citizen a solution as a digital mobile application where you can do everything. So we can't avoid the mobiles anymore. Mobile is the new way of life. How we use it, this is all depend on us. Google, Facebook, YouTube, these are all libraries, and what you watch, what you do, this is all is our choice. If we choose the right material, right strategy, right action, this digital media becomes our a blessing for us. Otherwise it's a curse. That's how I generally look into the digital world, and clutters are really important to remove. There should not be even 0.001% tolerance for clutters in the life. So with this, we will move towards our next section where we will have poetry in Urdu language. And Asma, which uh, poet you have chosen for this program? Today's choice is Ahmed Faraz. Ahmed Faraz is a ever progressive name in Urdu poetry, and the more we read, the more we enjoy the thoughts and the selection of words and his poetry. He had an abiding faith in the power of pen, a faith that we would well value and cherish when we listen to his poetry. तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला. Wow, 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 wow. What a beautiful concept. Actually, this is the share which I always repeat, and I advise people with this share that
be careful with the people you meet, because we in commercial life meet every day, especially as per my lifestyle. I meet new people every day, and they shake hand and they show very much compassion or interest, knowing you. And there it clicks in my head that dost hota nahi, har haath milane wala. What a beautiful concept. Ahmed Faraz is actually is not an ordinary shair. He actually matched the level of Ghalib and Iqbal in a very very soft way. Means because we are losing the pure Urdu times of Iqbal and Ghalib, but the Urdu that he selected is a mix of new and old, traditional, and very nice combination. Please go ahead. His original name was Sayyid Ahmed Shah, and he acquired the pen name of Faraz, and that's how he came to be known as Ahmed Faraz. He was born at Nowshera, although his ancestral place was Kohat. He got two masters, one in Urdu and one in Persian. He began his career as a producer in Radio Pakistan, and later he also worked as a lecturer at Islamia College, Peshawar. हमको उस शहर में तामीर का सौदा है जहाँ हमको उस शहर में तामीर का सौदा है जहाँ लोग मेमार को चुन देते हैं दीवार के साथ. What a inqalabi shairi. That's the truth of the life, that when you speak truth, people will come and they will tangle you everywhere where they can. So Ahmed Faraz also had a very hard life in terms of his political views, and he was being tortured a couple of times. A writer who deserved appreciation, accreditation, went to jail for writing a poem. A poem can be so serious or mind impacting that you have to put a shair in a jail. This is a discrimination. This is a humiliation of art and culture. But he did very nice struggle, and a very exemplary person he was. Yeah. He disapproved the military dictatorship in Pakistan, for which he was arrested. But on his release, he preferred to live in a self-imposed exile in Europe and Canada for 6 years. Back home, he also took up some senior positions of admin nature. अब और क्या किसी से मरासिम बढ़ाएं हम, अब और क्या किसी से मरासिम बढ़ाएं हम, ये भी बहुत है तुझको अगर भूल जाएं हम. वो खार खार है शाखे गुलाब की मानंद, वो खार खार है शाखे गुलाब की मानंद, मैं जख्म जख्म हूँ फिर भी गले लगाऊं उसे. चला था. You remind me, I want to interrupt you here. दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला. Please go ahead. चला था जिक्र जमाने की बेवफाई का, चला था जिक्र जमाने की बेवफाई का, सो आ गया है तुम्हारा ख्याल वैसे ही. फराज साहब कमाल करते हैं फराज. He's a widely respected poet. He received several national level awards, including Hilal-e-Imtiaz, which he returned, registering his displeasure with the country's government. He was decorated with Hilal-e-Pakistan Award posthumously by the government of Pakistan. He started writing his poetry while he was still young as a college student. He emerged as a ghazal poet with an individual style of his own. Even while he drew upon the traditional subjects of love and romance, he also wrote about all the disappointments he felt in life and produced some of the finest specimen of resistance poetry. मेरा कलम नहीं किरदार उस मुहाफिज का, मेरा कलम नहीं किरदार उस मुहाफिज का जो अपने शहर को महसूर करके नाज करे, मेरा कलम नहीं कासा किसी सुबुक सर का
जो गासिबों को कसीदों से सरफराज करे। There are several anthologies to his credit, like शहर वालों की मोहब्बत का मैं कायल हूँ मगर, शहर वालों की मोहब्बत का कायल हूँ मैं मगर, मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। क्या खंजर है ये, कमाल खंजर है ये। He also goes on to say, एक ये भी तो अंदाज इलाजे गमे जां है, एक ये भी तो अंदाज़े इलाजे गमे जां है, ए चारा गरो दर्द बढ़ा क्यों नहीं देते। दर्द बढ़ा क्यों नहीं देते, कमाल है, कमाल। Writer like Ahmed Faraz, if you increase the pain, they will get more charged, more motivated. I think it's about enjoying the pain. The more we experience, the more enjoyment. There are stages. There are stages when you increase the pain, and pain start making you a pleasure. This is a very high level of emotions. He had the ability to wrap layers of meaning into brief lines, which is a hallmark of an artist who has a command over his craft. एक तो ख्वाब लिए फिरते हो गलियों गलियों, एक तो ख्वाब लिए फिरते हो गलियों गलियों, उस पे तकरार भी करते हो खरीदार के साथ। खरीदार very interesting है इस शेर में, खरीदार। I'm going to share one poem of, there are a few selection of poems and nazm from his poetry. हर कोई दिल की हथेली पे है सहरा रखे, हर कोई दिल की हथेली पे है सहरा रखे, किसको सैराब करे वो किसे प्यासा रखे, उम्र भर कौन निभाता है ताल्लुक इतना, ए मेरी जान के दुश्मन तुझे अल्लाह रखे, हमको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा। This is the beautiful. हमको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा रखे, कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा रखे, दिल भी पागल है कि उस शख्स से वाबस्ता है जो किसी और का होने दे ना अपना रखे। What a complexity, what a complexity. आजकल मेरा ख्याल है रिलेशनशिप इसी भंवर में घूम रहे होते हैं। परवीन शाकिर ने भी तो कहा था ना कि ना वो उसको न चलने का हौसला नहीं रुकना मुहाल कर, तो ये बिल्कुल वही अहमद फराज भी उन्हीं कैफियत से गुजरे हैं एज अ मेल राइटर और वो फीमेल राइटर। अमेजिंग अमेजिंग। हंसना इतना भी फकीरों के अकेलेपन पर, हंसना इतना भी फकीरों के अकेलेपन पर, जा खुदा मेरी तरह तुझको भी तन्हा रखे। ये तो हस्बे हाल हो गया। मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। हंसना इतना भी फकीरों के अकेलेपन पर, जा खुदा मेरी तरह तुझको भी तन्हा रखे। गालिब सेड ना, गालिब ने कहा था बनाकर फकीरों का हम भेस गालिब तमाशा करम देखते हैं, तो बिल्कुल फराज ने वही टोन पे क्या फकीरी लेके आए। कमाल है, कमाल। प्लीज गो अहेड। ये कनात है इताअत है कि चाहत है फराज, हम तो राजी हैं वो जिस हाल में जैसा रखे। इसी पे अहमद फराज ने कहा था कि कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिज्र की कोई रात नहीं। मुश्किल है अगर हालात वहाँ दिल बेच आए जा दे आए, दिल वालों को चाहे जाना में क्या ऐसे भी हालात नहीं। और जो मेरा फेवरेट इसमें है, जो जिसके लिए मैंने ये चूज की है, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। Okay. Another poem is सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते।
Kamal. Well, very famous ghazal, and it's also famously sung by many leading singers in Pakistan. सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। आते और जाते, क्या बात है, क्या आते और जाते, क्या फराज ने जो कैफियत बांधी है, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। सिलसिले तोड़ना इतना आसान नहीं होता, खासकर उन लोगों से जिनके साथ आपका दिल का जो है वो रिश्ता होता है। सिलसिले तोड़ गया सभी जाते जाते, ऑलवेज देयर इज अ रूम टू कम बैक एंड गो। दिस इज फराज का बड़ा दिल था, वो ही कह सकते हैं, लेकिन जो चले जाते हैं वो फिर ऐसे नहीं सोचते। जाने वालों हाँ, ने कौन, that's शिकवाए good. जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। What a positivity. शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, means to keep complaining every time. It's very important that you do your part of your work. You keep your candle on. Amazing. Beautiful. कितना आसान था, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। इतना आसान नहीं है फराज साहब, इतना आसान नहीं है, very difficult. Amazing, amazing. जश्न मक्तल ही ना बरपा हुआ वरना हम भी, जश्न मक्तल ही ना बरपा हुआ वरना हम भी, पा बजौला ही सही नाचते गाते जाते। कि उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। What a compromise, compromise advice. What a beautiful advice from a writer like him. कि उसे पासे वफा था या ना था, तुम अपनी तरफ से तो निभाते जाते। वाह वाह। कुर्बतों में भी जुदाई के बहाने मांगे। What a beautiful feeling, you are together but you are looking for separation. कुर्बतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे, दिल वो बेमहर के रोने के बहाने। क्या हंसते हार। Soft-hearted people are like this. They need to weep anywhere, anytime. अपना ये हाल कि जी हार चुके, लुट भी चुके, और मोहब्बत वही अंदाज पुराने मांगे। हम ना होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे, खलकते शहर तो कह सुनने को फसाने। वाह 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 वाह। Please go ahead. तू के अनजान है इस शहर के आदाब समझ, तू के अनजान है इस शहर के आदाब समझ, फूल रोए तो उसे खंदाए शादाब समझ। कहीं आ जाए मयस्सर तो मुकद्दर तेरा, वरना आसूदगी दहर को नायाब समझ। हसरत गिरिया में जो आग है अश्कों में नहीं, खुश्क आंखों को मेरी चश्मे बेआब समझ। फराज मौजे दरिया ही को आवार आए सत शौक न कह, रेगे साहिल को भी लबे तिश्नाए सैलाब समझ। अब किसे साहिल उम्मीद से तकता है फराज, वो जो एक कश्ती दिल थी उसे गरकाब समझ। ओह क्या कश्ती है और क्या दिल है, और क्या जोड़ा है फराज ने इसको। कमाल कमाल। रफाकतों में पशेमानियां तो होती हैं, और के दोस्तों से नादानियां तो होती हैं। This is I always say for my very close friends, who does bad things.
I tell them रफाकतों में पशेमानियां तो होती हैं, दोस्तों से तो नादानियां तो होती हैं, बस इस सबब से तुझ पे बहुत भरोसा था, गिले ना हो तो हैरानियां तो होती हैं, फराज भूल चुका है तेरे फिराक का दुख, कि शायरों में तन आसानियां तो होती हैं। वाह वाह। और अहमद फराज, प्लीज गो अहेड। उसने सुकूत शब में भी अपना प्याम रख दिया, उसने सुकूत शब में भी अपना प्याम रख दिया, हिज्र की रात बाम पर माहे तमाम रख दिया। ये तो परवीन शाकिर है ना, माहे तमाम। This is from Faraz. हाँ, is it? You know, because माहे तमाम एक होता था, परवीन शाकिर की भी एक बुक है ना, माहे तमाम के नाम। Yeah, that's the name of her book. बड़ी close resemblance है माशाल्लाह। चले, go ahead. You will recognize the last verse once you will relate to it. आमदे दोस्त की नवीद कुए वफा में आम थी, मैंने भी एक आमदे दोस्त की नवीद कुए वफा में आम थी, मैंने भी एक चराग सा दिल सरे आम रख दिया, वाह वाह, सरे बाम रख दिया, वाह, सरे शाम रख दिया, वाह वाह। शिद्दते तिश्नगी में भी गैरते मैं कशी रही, उसने जो फेर ली नजर मैंने भी जाम रख दिया। कमाल कमाल कमाल। इतनी गैरत तो अहमद फराज में ही थी बस। कमाल कमाल। उसने नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, उसने नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। वाह 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 वाह। देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे जख्म हैं, मैंने तो सब हिसाबे जां बरसरेआम रख दिया। वाह वाह वाह। देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे जख्म हैं, मैंने तो सब हिसाब जां पर सरेआम रख दिया। जो भी मिला उसी का दिल हल्का बगोश यार था, उसने तो सारे शहर को करके गुलाम रख दिया। और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे। Oh, कमाल कमाल। वैसे this is true. All Faraz in this time is on Ahmed Faraz. और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया। वाह 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 वाह। उसने जिंदगी प्लीज गो। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तो बहुत देर से मिला है मुझे, तो मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे, हम सफर चाहिए हजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। Come on. Ahmed Faraz, the beauty of Urdu language, the man of the feelings, which you can relate. सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, ये बात है तो चलो उससे बात करके देखते हैं। We grew up with this poetry. We grew up when we were in school, college. Life was incomplete without Ahmed Faraz. Indeed. It's very, very connected. Very, very connected. Please go ahead. Now I have some selection from his nazm. The first one is ख्वाबों के व्यापारी। हम ख्वाबों के व्यापारी थे, पर उसमें हुआ नुकसान बड़ा। कुछ वक्त में ढेरों कालक थी, कुछ अब के गजब का काल पड़ा। हम राख लिए हैं झोली में और सर पे है साहूकार खड़ा। या बूंद नहीं है डेवे में, वो बाज ब्याज की बात करे। हम बांझ जमीन को तकते हैं, वो ढोर अनाज की बात करे।
हम कुछ दिन की मोहलत मांगे, वो आज ही आज की बात करे। जब धरती सहरा सहरा थी, हम दरिया दरिया रोए थे। जब हाथ की रेखाएं चुप थी और सर संगीत में सोए थे, तब हमने जीवन खेती में कुछ ख्वाब अनोखे बोए थे। कुछ ख्वाब सजल मुस्कानों के, कुछ बोल कबत दीवानों के, कुछ लफ्ज जिन्हें मानी न मिले, कुछ गीत शिकस्ता जानों के, कुछ नीर वफा की शम्मों के, कुछ पर पागल परवानों के। पर अपनी घायल आंखों से खुश होके लहू छिड़काया था। माटी में मांस की खाद भरी और नस नस को जख्माया था। और भूल गए पिछली रुत में क्या खोया था, क्या पाया था। हर बार गगन ने वहम दिया अब के बरखा जब आएगी। हर बीज से कोंपल फूटेगी और हर कोंपल फल लाएगी। सर पर छाया छतरी होगी और धूप घटा बन जाएगी। जब फसल कटी तो क्या देखा, कुछ दर्द के टूटे गजरे थे, कुछ जख्मी ख्वाब थे कांटों पर, कुछ खाकिस्तर से कजरे थे, और दूर उफक के सागर में कुछ डोलते डूबते बजरे थे। अब पांव खड़ाऊं धूल भरी और जिस्म पर जोक का चोला है। सब संगी साथी भेद भरे, कोई मासा है कोई तोला है। इस ताक में ये उस घात में वो, हर ओर ठगों का टोला है। अब घाट न घर दहलीज न दर, अब पास रहा है क्या बाबा, बस तन की गठरी बाकी है। जा ये भी तू ले जा बाबा, हम बस्ती छोड़े जाते हैं, तू अपना कर्ज चुका बाबा। Wow, 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 wow. Ahmed Faraz. Oh, what an amazing poet, and what a deep thoughts, and the way you justify it is amazing. And time does not permit us. We want to go as long as we can. Ahmed Faraz, hours and hours are less to read his poetry thoughts. So I would request you for a closing choice of yours for Ahmed Faraz. Yeah. So the intricacy of the wordplay, ability to surprise, to invoke a smile, to intertwine pathos with anticlimax, inducing a deep, delicious, delightful melancholia. 4 decades later, it still sounds fresh and is hugely popular among audiences everywhere. I would like to quote 2 verses as a closing. आज हम दार पे खींचे गए जिन बातों पर, आज हम दार पे खींचे गए जिन बातों पर, क्या अजब कल वो जमाने को निसाबों में मिले। अब तेरा जिक्र भी शायद ही गजल में आए, और से और हुए दर्द के उन्वान जाना। Thank you very much. Oh, thank you, Asma, for joining us today and sharing a beautiful thoughts about Ahmed Faraz. It was a pleasure. Thank you. So, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए आ. Sometimes you get these feelings where you want to recall someone who has already lost, and you have a desire to meet at least one time. So then you read these beautiful words of Ahmed Faraz. रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ. And sometimes you are looking around and recalling Ahmed Faraz and you say, जिस सिमत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, जिस सिमत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, ए जाने जहां ये कोई तुम सा है या तुम हो. Sometimes we want to feel people around. Ahmed Faraz is an amazing poet.
a national asset for the Urdu followers and fans. With this, ladies and gentlemen, we'll move towards our Arabic reciter and see what she has for us for the day. Hello. Yes, Salma. I was searching actually about Ahmed Faraz, and that's I right. saw that he have a founding director of the Pakistan Academy of Letters. Yes. He has a great contribution about arts and culture, and he's an amazing person. I guess research of 10 minutes is not enough for him. He has a lot of things, and I will enlighten you about his achievements, his poetry, how deep it is, how he understands the relationships is amazing. So, Salma, what is your choice of the day? Please go ahead. Yes. As I mentioned earlier, I have poems about life. اخترت أبيات شعرية عن الحياة. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الحياة: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها. لا الدار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. والنفس تعلم أني لا أصادقها ولست أرشد إلا حين أعصيها. واستمر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الإبداع في الحديث عن الحياة وفقا لخبراته وتجاربه الجليلة ليقول: حياتك أنفاس تعد، فكلما مضى نفس أنقصت به جزءا، ويحييك ما يفنيك في كل حالة، ويحدوك حاد ما يريد بك الهزاء، فتصبح في النفس وتمشي بغيرها. أبدع المتنبي رحمه الله في حديثه عن الحياة فقال: إني لأعلم واللبيب خبير أن الحياة وإن حرصت غرور، ورأيت كل ما يعلل نفسه بتعلة إلا والفناء يصير. قال مهدي الجواهري في تجربته عن الحياة بأبيات شعرية: كثيرون هم من تخرجوا من مدرسة الحياة، فمنهم من نفعته تجربته في المضي قدما رغم الصعاب، ومنهم من توقف في نصف الطريق، ومنهم من يقف منتظرا يرجو فسحة من الأمل. فقال مهدي الجواهري في أبياته: وما الحياة سوى حسناء فاركة مخطوبة من أحبائي، وأعداء قد تمنع النفس أكفاء. وربما وهبتها غير أكفاء، ولا يزال على الحالين صاحبها معذب النفس فيها بين الداء. فإن عجبت لشكوى شاعر طرب، طول الليالي يرى في زي بكاء. فلست أجهل ما في العيش من نعم، أنا الخبير بأشياء وأشياء، ولا أحب ظلام القبر يغمرني، أنا الخبير بأشياء وأشياء. وإنما أنا والدنيا ومحنتها كطالب الماء لما غص بالماء، أريدها لمسرات فتعكسها، وللهناء فتثنيه لإيذاء. وقد تتبعت أسلافي فما وقعت عيني على غير مشغوف بدنيا دم الحياة أناس، لم تواتهم ولا دروا غير در الإبل والشاء وقلته على العمياء. قصيدة إني لأعلم واللبيب عليم للشاعر المتنبي: إني لأعلم واللبيب خبير إن الحياة وإن حرصت غرور، ورأيت كل ما يعلل نفسه بتعلة وإلى الفناء يصير. أنتقل إلى قصيدة أحمد شوقي، قصيدة وإذا نظرت إلى الحياة وجدتها.
وإذا نظرت إلى الحياة وجدتها عرسا أقيم على جوانب مأتم. لا بد للحرية الحمراء من سلوى ترقد جرحها كالبلسم، وتبسم يعلو أسرتها كما يعلو فم الثكلى وثغر الأيم. يوم البطولة لو شهدت نهاره لنظمت للأجيال ما لم ينظم. غنت حقيقته وفات جماله، باع الخيال العبقري الملهم. لولا عوادي النفي أو عقباته، والنفي حال من عذاب جهنم، لجمعت ألوان الحوادث صورة، مثلت فيها صورة المستسلم، وحكيت فيها النيل كاظم غيظه، وحكيته متغيظا لم يكظم. دعت البلاد إلى الغمار فغامرت، وطنية بمثقف ومعلم، ثارت على الحامي العتيد وأقسمت بسواه جل جلاله لا تحتمي. نثر الكنانة ربها وتخيرت يده لنصرتها 3 أسهم. أعود إلى علي بن أبي طالب في قصيدة أنتقل إلى قصيدة أخرى. النفس تبكي على الدنيا. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها. ما لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ فكم مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهلها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنيها ويفنيها. لكل نفس وإن كانت على وجل من المنية آمال تقويها. المرء يبسطها والدهر يقبضها، والنفس تنشرها والموت يطويها. إن المكارم أخلاق مطهرة. العقل الدين أولها، والعقل ثانيها، والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والفضل سادسها، والبر سابعها، والشكر ثامنها، والصبر تاسعها، واللين باقيها. والنفس تعلم أني لا أصادقها، ولست أرشد إلا حين أعصيها، وأعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. Awesome. Akalu Sania, what I advise, keep your wisdom always below. So you would like to summarize, Salma, about the concept of life? Most of the poets here, they talk about life and how to the nafs, how to work out of your character, and why the people or the person or the nafs cry on this dunya, and how to maintain your relation with God and the people for your life and here and after life. This actually the last poet about life and death, and what's the benefit and how you can
work out for your afterlife. So whatever you build or do here, you are living from dunya to akhirah. Amazing, amazing. That's why we say that Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati wa hasanatan wa qina azaban nar. Amazing, amazing. So, what time is not permitting us, I would request you for your closing thoughts of the day. I will talk about a small poem of إيليا أبو ماضي. أيقظ شعورك بالمحبة إن غفى، لولا الشعور الناس كانوا كالدمى. ليست حياتك كما صورتها، إن الحياة بصمتها ومقالها. ليس الكفيف الذي أمسى بلا بصر، إني أرى من ذوي الأبصار عميانا. إن التأمل في الحياة يزيد أوجاع الحياة، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. إنني أشهد في نفسي صراعا وعراكا، وأرى ذاتي شيطانا وأحيانا ملاكا. هل أنا شخصان يأبى هذا مع ذاك اشتراكا، أم تراني واهما فيما أراه؟ أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أحبب فيبدو الكوخ كونا نيرا، وأبغض فيبدو الكون سجنا مظلما. Thank you very much. Amazing, amazing. What a beautiful concept of Hayat, and the way you justify it, read it, these beautiful verses and ayats, these are beautiful. I want to thank you for joining us today, and I'm looking forward to have more new topics in our next coming programs. Thank you very much. So, ladies and gentlemen, with this, we are almost in the end of our beautiful program called Art and Culture Show. This show is for you. You are stressed, you are into very materialistic commercial life where people are not listening to your feelings. Here is the program, 1 hour, which is soothing, which makes you calm and relate your feelings with different writer, poets, and where you can yourself, relate yourself, your feelings. You are not alone. We are all connected and together through art and culture show. If you want to be a part of this show, you can write us, contact us, and we will take you in the show with your beautiful concepts and content. Till then, take care of yourself, and I'm looking forward to see you in the next program. Allah Hafiz, goodbye, and take care of yourself.